हेलो फ्रेंड्स, मैं सृष्टि गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज हम फोनिक्स एक्टिविटी के अंदर थर्ड अल्फ़ाबेट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज़ क। सी इसका नेमिंग वर्ड होता है सी और इसका फोनिक साउंड होता है क क क क क। ओके, सो फर्स्ट एक्टिविटी जो आपको अपने बच्चों को करानी है वो है उन्हें इमेजेस दिखाना। यानी कि सबसे पहले आपको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी है कि क से कौन कौन सी इमेजेस वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कौन कौन सी इमेजेस को वो अपने माइंड में बना सकते हैं। तो उस एक्टिविटी के लिए हम सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, दीज आर द फ्लैश कार्ड्स। सी क कौन। सो फर्स्ट आपको अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना है ताकि वो अपने माइंड में एक इमेज क्रिएट कर सके कि हम क साउंड से कौन कौन से न्यू वर्ड्स या न्यू ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज क कौन एंड दिस इज क कैट। क कैट। दिस इज क कार। दिस इज क कार। देन सी, दिस इज क cup. Cup. Then comes cat. Cat. Then comes cow. Cow. Cap. Cap. Then comes car. car. So these are the words जो आप अपने बच्चों को पहले इंट्रोड्यूस कराएंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे आप अपने बच्चों को इंट्रोडक्शन कराइए ताकि उन्हें याद हो सके कि वो क अल्फ़ाबेट से, क वर्ड से कौन कौन से और वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे कि आप अपने बच्चों को बहुत इजीली दिखा सकते हैं क crayons, क color. So this is a color. This is a color. क crayons. ओके, जब आपके बच्चों को एक इमेज सेटल हो जाती है उनके माइंड में दैट दिस इज क, दिस इज क, दिस इज क फॉर काउ, क फॉर कैप, क फॉर कार। इस तरीके से जब आप सारे ऑब्जेक्ट, सारी इमेजेस से अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा चुके होते हैं, फिर आप बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की, हमें अपने बच्चों को आइडेंटिफाई कैसे कराना है। सो आइडेंटिफिकेशन के लिए ज़रूरी है आप कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को ज़रूर कराइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी हट्स बनाई हैं। नाउ दे हैव टू आइडेंटिफाई द अल्फ़ाबेट क, they have to identify the alphabet k and they have to color it. They have to color it. So this is a, this is not k, this is f, this is not k, this is k, yes, k. So they have to color it, they have to color it. This is k, this is k. So they have to color it, they have to color it. Similarly they have to color this hut also. This is k, this is k, this is k. This way you can make them identify, वो बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स के अंदर ओनली लेटर क को आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को कुछ इस तरीके की इमेजेस भी बना के दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कार बनाई है। सो दे हैव टू राइट इट हियर क, they have to write it here k, this is k car, and they have to color the car, they have to color the car. Now you have to ask your child how they can make k. Now here comes the writing activity. अब आपने अपने बच्चों को जब आइडेंटिफिकेशन करा दिया, उनके माइंड में इमेजेस क्रिएट करा दी रिलेटेड टू लेटर क, now you have to teach them how to write. For that I have this very wonderful activity with me. See, this is making letter k, this is making letter k. So what they have to do, you can simply take these things out, you can bring them out and ask them to make words with letter k, make the words which are starting from the letter k. So they are going to place it here, k cat, k cap, k car. Okay, so they have to make it like this. And what they can make, how can they learn to make a letter k? So what they have to do, see, this is k and they have to trace it, they have to trace it and they have to say it, they have to trace it and they have to say it loud,
They have to trace it and say it loud. So ask them to trace it 5 times. K, K. By doing this activity, they will learn how to make K. You can even ask them to trace it with their fingers. K. This is K. So this is K. Okay. After they can understand and they can trace their fingers with this, and they can make it K with this tracing stencil, then you have to make them start writing K and make new words here. I made a big K here and I wrote certain 3-letter words for them. So let's see. We'll write K. So K, K, car. Then K, 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 cat. K, K, cup. K, K, cot. K, K, cap. K, cow. K, clap. Then K, clock. Then K, cake. So this is the way you can teach them easily to write K and identify new words which they can make with the letter K. And this is a big beautiful cupcake. K, K, cupcake. And here I have drawn certain dots over here. So you can teach them to trace on them and they'll learn how to write letter K. So they have to trace it. K. They have to trace it. Letter K. They have to trace it. Letter K. ओके और इसके बाद आप अपने बच्चों को बहुत सारी ऐसी बुक्स के थ्रू भी आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं. सी दिस इज अ राइटिंग बुक वेयर यू कैन टीच देम इजीली टीच देम क क्रैप. सो यू कैन टीच देम क crab. They have to trace it. Okay, when they learn how to trace, you can use another kind of books like this where they have to again write the smaller form of K. This is capital K, this is small k. Okay, so they have to make it like this. K, 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 cat. K, K, camera. K, cap. K, candle. This is the way you have to teach your child how to write a letter K and how you can introduce them with letter K. I hope आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो. प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.